Today I am going to discuss about the refraction of light at spherical surfaces. Spherical surfaces means through lenses here. In the last video, already I had given you how can we find the refractive index, how can we apply the Snell's law and law of refraction, everything already I have told in the previous video. Some more points I would like to tell you before I start this topic here. First one, suppose if refractive index, and all of you know refractive index is denoted by N. The refractive index, like suppose here glass, refractive index of glass with respect to water. And already I have told you, if the refractive index of any material is given with respect to air, so that one is said to be its absolute refractive index. But here suppose given refractive index of glass with respect to water, not air, it means this one you can write in the ratio of their absolute refractive index. How? You will write here refractive index of glass upon refractive index of water. If no any medium is here, it means here air, here air. कहने का मतलब refractive index of glass with respect to water, you can write refractive index of glass with respect to air to refractive index of water with respect to air. It means it is the ratio of their absolute refractive index. कहने का मतलब refractive index of glass with respect to water, you can write is ratio of absolute refractive index of glass to the absolute refractive index of water. In same way, if suppose it is written like N2 upon N1, so actually this one is what here you can write N2 upon N2. Like refractive index of glass upon refractive index of water. N to 1 means refractive index of second medium upon refractive index of first medium. So this one you can write like this one also here. So since I am going to use this one, due to this reason I am telling you. So one more thing I would like to tell you about the sign convention which will be used in the case of the spherical surfaces. Spherical surface means either concave spherical surface or convex spherical surface. Means in this case, how this sign convention will be used. I hope we all of you know if the distance of the object from the lens is denoted by U, and the distance of image from the lens is denoted by V. And also you know lens formula. Later I will tell you what is the lens formula. But in this case, suppose this one is an optical center and this one is a lens, and this lens कुछ भी हो सकता है, कॉन्वेक्स ले सकते हैं आप, कॉन्केव ले सकते हैं, या कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, so it's not matter. Then you will draw the two axes which passes through its optical center. इसको दो axes में divide करते हैं, and all the distance which measure on the left hand side of it. Because if you will take a coordinate geometry like this one here, so all the distance measure right hand side is positive, left hand side negative, above it positive, and below it negative. It's the same sign convention we will use for the refraction through the spherical surface. All the distances which measure on the left hand side of O negative और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, जो भी रहेगा स्फेरिकल सरफेस, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव. राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव, अबव इट पॉजिटिव, एंड बिलो इट नेगेटिव. सो सेम टाइप ऑफ द साइन कन्वेंशन वी विल यूज इन द केस ऑफ lenses. Now, refraction at concave spherical surface. Actually here there is a refraction at concave spherical surface as well as the refraction at convex spherical surface, and the method everything is same. So I am discussing here refraction at concave spherical surface, and same procedure you will use from yourself for finding the refraction through the convex spherical surface. So what you look here, let S P S dash, this one, a concave spherical surface, S P S dash be a concave spherical surface which separates the two medium. First, a rarer medium of absolute refractive index N1 and a denser medium of absolute refractive index N2.
ये एसपीएस डैश एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है जो कि दो मीडियमों को सेपरेट कर रहा है। इधर वाला मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम, जो ये है। डेंसर में जैसे ग्लास है तो ग्लास रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium with respect to air means absolute refractive index of this denser medium is n2 and the absolute refractive index of this rarer medium is what here n1. Now you see OP, this line is what here, this one is a principal axis for this spherical surface SPS dash. P is called pole. P is called pole of this spherical surface. And suppose, already I have told you, if you want to draw a spherical surface or if you want to draw a normal on a spherical surface, then first you find out its center of curvature. For this spherical surface SPS dash, its center of curvature is lies its left. इधर से खींचा गया होगा. So its center of curvature is C, and which is lies on what side? Left hand side. So center of curvature C, and already I have told you in the previous video, if you want to draw a normal on spherical surface, then you draw a line on that spherical surface passes through the center of curvature. तो ये जो center of curvature से हम इस spherical surface के ऊपर एक line ड्रॉ किए हैं, dotted line CAN. So this CAN we act as a normal on this SPS dash means on this spherical surface. Second thing, O is any point object which is placed on the principal axis of this spherical surface. इस concave spherical surface के principal axis पे कोई object O रखा हुआ है, and O is the object when a ray of light taken from this object as OA. इस object से मान लीजिए पहली ray चली OA, and since this ray is going from rarer to denser, so it bends towards the normal. इसलिए यहाँ पे जो normal CAN था, इसकी तरफ ये ray क्या करती है? बेंड कर रही है. So OA is an incident ray, while AB is what ray? Refracted ray. And what is CAN? This one is normal. Then now a question is here, where the image will form. So for forming the image, when you will extend this refracted rays AB, चूंकि ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए इससे जो इमेज बनेगी क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज. और वो वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? फॉर दैट पर्पस यू एक्सटेंड दिस रेज AB इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसी रिफ्रैक्टेड रेज AB को एक्सटेंड करिए बैकवर्ड डायरेक्शन में. वेयर इट मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट I. इसका मतलब इस रिफ्रैक्टेड रे AB को हम पीछे बढ़ाएंगे और वो कहां मिल गया? प्रिंसिपल एक्सिस पे, I पे. इट मींस this concave surface SPS dash will form the image of this object O at point A. And this image is what image? Real or virtual? This one is a virtual image. And now you see OA incident, AB refracted, and CAN is normal. You know, angle of incidence and angle of refraction is measured from normal. Means angle between incident ray and normal, angle of incidence, and angle between refracted ray and normal is taken as an angle of refraction. Now you see what is the angle of incidence. This one is OA incident ray. This one is normal CAN. So angle between incident ray and normal means angle OAC. This angle is I, which is angle of incident. And AB is refracted ray. And this one is normal. So angle between refracted ray and this normal, this angle is R. And when you will extend this refracted rays in the backward direction, so this angle R, so vertically opposite this angle should be also R. It means angle IAC is equal to R.
hope maybe angle of incidence and angle of refraction is clear. Angle OAC is equal to I, and angle IAC is equal to angle R. And suppose this incident ray OA makes angle alpha with the principal axis. This extended refracted ray makes angle beta with the principal axis, and this normal makes angle gamma with the principal axis. हमने मान लिया कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, एक्सटेंडेड जो रिफ्रैक्टेड रेज थी वो बीटा, और ये नॉर्मल कितना एंगल बना रही है इससे गामा. एंड बी केयरफुल, दिस गामा एंड आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल गामा है. इसकी पूंछ थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इसके लिए. सो दिस इज गामा. एंड नाउ यू सी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी मैंने बताया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल is taken as measured as u, is considered as u. Distance of image from the pole is taken as v, and center of curvature is c. So distance from pole to center of curvature, this one is called r. ये distance r, ये distance v और ये distance u. हमेशा याद रखिएगा स्फेरिकल सरफेस के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो पोल से ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं उससे u को डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की और पोल्स ऑफ की डिस्टेंस को कैसे करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर r. तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल OAC, एंगल OAC is equal to I, OC is equal to I, and angle IAC is equal to R, and angle IAC is equal to R. Angle of incidence, angle of refraction. And now you look here, when you will use a sign convention, all distance RVU is measured on left hand side of pole or right hand side? Left hand side. And when you will measure the distance on the left hand side, then all these distances will be measured with what sign? Negative. It means PC is equal to minus R. So you will take here PC is equal to minus R, PI is equal to minus V, and PO is equal to how much here? Minus C. Or simply you can say OP minus U, IP minus V, CP minus R. Simply you can say this. Since all these distances were measured in the left hand side of the pole, so when you will use the sign convention, then all these distances should be measured with what sign? Negative sign. And when you will drop a perpendicular, यहां हमने A से एक perpendicular drop किया है, किस पे? On the principal axis, and this perpendicular meets the principal axis at the point M. So this AM. और याद रखिएगा, for small aperture of this spherical surface, इस spherical surface के small aperture के लिए, small aperture means S और S dash की distance जो है वो कम हो. तो for small aperture of SP S dash means for small aperture of this spherical surface, this point M becomes very close to the point P. अगर इसका डिस्टेंस S से S डैश के बीच की डिस्टेंस घटाएंगे तो इसका क्या होगा? कर्वेचर बढ़ता जाएगा ये. तो S से S डैश की डिस्टेंस को जितना घटाएंगे तो इसका मतलब एपर्चर उतना ही इसका कम हो रहा है. एंड एट दैट टाइम दिस पॉइंट A कम्स क्लोजर टू द पॉइंट P, और ये पॉइंट A P की जितना क्लोज आएगा, ये पॉइंट M भी P की उतना ही क्लोज होता जाएगा. रिमेंबर दिस. Now, so first we consider to prove this relation for this spherical surface. First we will take from triangle COA. In triangle COA, look here, it looks like this one, COA. So this angle is alpha, this angle is I, COA, this angle is I, and this exterior angle is gamma. And in any triangle,
the exterior angle is equal to sum of opposite interior angle. So here you can write gamma is equal to alpha plus I. So from triangle COA, gamma is equal to alpha plus I. Or you can write here I is equal to R. I is equal to, you can write gamma minus alpha, this equation number. I hope it is clear to all of you how will we find. Be careful with this diagram. Everything is hidden only in this diagram. सब कुछ इसी में छिपा हुआ. And again from triangle, now you write here CIA. From triangle CIA. यही दो ही ट्रायंगल में से सब कुछ मिलेगा. And triangle CIA, when you will take C, suppose this one is I and this one is A. In triangle CIA, यहां से आता है A, ये पूरा. So this angle is R, this angle is beta, and this angle is gamma. And again you can write in this triangle CIA, exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. So you can write gamma is equal to beta plus R. Be careful about this R and gamma. So from here R is equal to gamma minus beta. So in this you can find out the value of I and R in terms of gamma alpha and gamma beta from these two triangles. And now, since rays is going from rarer to denser, so for you first medium ये है आपके लिए और second medium ये है. So when you will write here, or when you will apply the Snell's law, now by Snell's law, now we are going to apply the Snell's law for this case. So for Snell's law, sin I upon sin R, you can write sin I upon sin R is equal to refractive index of second medium and with respect to first medium, you can write N21. And at place of N21, अभी मैंने बताया, you can write this is equal to absolute refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium. You can write this one, hold this one also. अभी मैंने बताया था just. So sin I upon sin R is equal to N2 upon N1. Or you can write from here, or N1 sin I is equal to N2 sin R. N1 sin I is equal to N2 sin R. Suppose this equation, this one equation number third. And remember this, for here I am taking one assumption. Several times this question be asked in the board exam like this one here. What assumption you have made in this derivation? So what assumption I am going to take? If the aperture of this spherical surface be small, or for a small aperture of this spherical surface, what happened? This point A comes very close to the point P. ये point A point P के क्या हो जाएगा? बहुत ही close हो जाएगा. So here we will take one assumption. What that assumption? If or for a spherical surface of a small aperture, for a spherical surface of a small aperture, point A be very close to the point P. This point A becomes very close to the point P, and in this situation, when A comes very close to the point P, then angle I and angle R becomes very small. तो ये assumption याद रखिएगा कि for a small spherical aperture, point A comes very close to the point P, and in this case, all the angle like angle I and R becomes very small, as well as angle this alpha, beta, gamma becomes also small. क्योंकि ये A इधर आ जाएगा तो अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा इधर,
तो ये एंगल अल्फा बीटा गामा भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और जानते हैं कि इफ सपोज आई एंड आर इज स्मॉल and suppose these angle I, R, alpha, beta, gamma be measured in radian, अगर measure किया गया हो तो for a small angle at place of sin I we can write only I, at place of sin R we can write R, also at place of sin and tan के केस में ये होगा, at place of tan also we can write like tan alpha is equal to alpha, tan beta is equal to beta, tan gamma is equal to gamma for a small angle, but not in the case of cos। तो साइन और tan के केस में क्या हो जाएगा, इट मींस क्लोज टू द पॉइंट P देन I and R will be small, so at place of sin I now we can write only I and sin R is equal to R। अगर एंगल बहुत छोटे हैं I और R और मेजर किए गए हैं किसमें, रेडियन में, then at place of sin I you can write only I, and place of sin R you can write R, at place of tan alpha you can write only alpha, at place of tan beta you can write beta, at place of gamma, tan gamma you can write also gamma। So when we use this concept sin I is equal to I and sin R is equal to R, now at place of this sin I we can write I, so N1 I is equal to N2 R, or we can write here N1 at place of I from this first equation gamma minus alpha, N1 gamma minus alpha is equal to N2 at place of R is what here, gamma minus beta, gamma minus beta। And now from here we can write direct from here we can write here N1 gamma minus N1 alpha is equal to N2 gamma minus N2 beta। Now you take the term of gamma one side and rest term other side, so here you can write take N1 gamma this side and this minus N2 beta this side, so already here N2 gamma, take N1 gamma this side, so you can write इसको जब हम इधर लेंगे तो हो जाएगा N2 बीटा, ये माइनस से प्लस हो गया, माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N1 गामा, और वी कैन राइट हियर N2 बीटा minus N1 alpha is equal to N2 minus N1 gamma। Suppose this equation number 4. This is very important equation. And now simply at place of alpha, beta and gamma, from this triangle we will measure here tan alpha, tan beta, tan gamma, and finally put the value here and you find out the expression for the refraction through the concave spherical surface। Now since for a small aperture of this spherical surface A is very close to the point P, so angle alpha, beta, gamma भी also becomes very small। सभी एंगल I, R, alpha, beta, gamma सब एंगल क्या हो जाएंगे, बहुत ही छोटे। एंड फॉर स्मॉल एंगल यहाँ तो हमने साइन I की जगह पर I ले लिया, साइन R की जगह पे R, और यहाँ लेंगे अल्फा की जगह पर tan अल्फा ले सकते हैं, tan अल्फा की जगह पे अल्फा ले सकते हैं, इसी तरह से बीटा की जगह पर tan बीटा भी ले सकते हैं, एंड गामा की जगह पर tan गामा, कब, जब एंगल अल्फा, बीटा, गामा बहुत ही छोटे हो। तो नाउ at place of alpha is equal to tan alpha, मतलब अगर हम इस ट्रायंगल में देखिए फ्रॉम ट्रायंगल AOM, this one is a right angle triangle AOM, and you can write tan alpha is equal to perpendicular upon base, so tan alpha is equal to AM upon OM, so tan alpha is equal to AM upon OM। मैंने क्या बताया, अल्फा बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा की जगह पर क्या ले सकते हैं, tan अल्फा, या tan अल्फा की जगह पर क्या ले सकते हैं, केवल अल्फा, तो AM upon OM। अब since M is very close to the point P, अगर A बहुत क्लोज होगा P के, तो ये पॉइंट M भी P के क्या होगा, बहुत क्लोज, तो at place of OM nearly you can write OP, so is equal to
ए एम अपॉन ओ। हमने क्या कहा, ओ एम लगभग ओपी के बराबर होगा, जो कि पॉइंट एम बिकम्स वेरी क्लोज टू द पॉइंट। और मान लेते हैं ये ए एम की हाइट जो है वो एच है, तो हम लिख सकते हैं इसको एच अपॉन, और बताएं ओ टू पी दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, यू। और जब लेंगे ओपी तो साइन के साथ, ये यू के साइन के साथ लेंगे माइनस, तो एच अपॉन माइनस। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। अब इसमें लीजिए ए आई एम, we can write tan beta is equal to am upon am upon im, और im चूंकि m बहुत क्लोज है p के, इसलिए इसके लिए ip भी लिख सकते हैं या pi, तो am upon pi और ip is equal to h upon, और p से i तक के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, माइनस p, तो h upon minus p। And similarly gamma is equal to tan gamma is equal to, now you will take AC। हमने तीन राइट एंगल ट्रायंगल लिया, AOM, उससे निकाला tan अल्फा जो कि अल्फा के बराबर है। Similarly from triangle AIM we can equate the tan beta, and ACM इससे निकालिए गामा is equal to tan gamma, and this tan gamma is equal to AM upon CM, AM upon CM is equal to AM, and at place of CM you can write CP is equal to CP, and here you can write H upon minus R। ये मिल गया। And now at place of beta, alpha, n2 minus n1 gamma, यही वैल्यू आप रख दीजिए। So from equation 4, we will write n2 beta. Here n2 beta means h upon minus p, h upon minus n1 alpha, minus n1 at place of alpha, h upon minus e is equal to n2 minus n1, n2 minus 1 at place of gamma, h upon minus r। ये इतना हो गया, इन सबको हटा this one। And now you see h दोनों तरफ है, तो h तो कैंसिल हो जाएगा अगर हम h का मान लें, और यहां देखिए यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये भी कैंसिल कर दीजिए माइनस, लेकिन ये माइनस रहेगा तब, ऐसा नहीं इस माइनस को मत कैंसिल कीजिए, क्योंकि हम यहां को माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ, तो h मींस अगर हम यहां से माइनस h को काउंट कर दें तो इधर का और इधर का सब कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट हियर, n2 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r, n2 minus n1 हमने क्या कॉमन ले लिया यहां पे, माइनस h, यहां भी माइनस h और यहां भी माइनस h, उसको हम कॉमन ले लिए इधर, तो माइनस h से माइनस h कैंसिल होगा, you will get this one। This is the formula for the diffraction through a spherical surface, and here I want to tell you same formula you will get when you will consider the refraction through convex spherical surface। Everything is same, concept is same like this one, and you can also consult with your book for derivation of the refraction through the convex spherical surface, and everything is same, procedure is same, जैसे हमने इसमें किया, and finally you will get the same result also there, वहां पर भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा। And one more thing I want to tell you,
here N2 is what? Absolute refractive index of denser medium. N1 absolute refractive index of rarer medium. And VU all of you. तो अगर यहाँ पे क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई N1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई N1, अगर इसको हम दोनों तरफ N1 से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट हियर N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 U, क्योंकि दोनों तरफ सेम टर्म से डिवाइड करें इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 और यहाँ हो जाएगा एंड नाउ N2 बाई N1, अगर इसको हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ डेंसर मीडियम टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, तो अगर हम एक N2 by N1 is equal to N हम लिखते हैं, यहाँ पे N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। याद रखिएगा N2 by N1 क्या है, N2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, और N1 क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। तो at place of N2 by N1 if we consider N, then you will write here N2 by N1, you will write N, और यहाँ P है N अपॉन P माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन U इज इक्वल टू, यू कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट, N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1। तो जब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो N2 बाई N1 तो हो जाएगा N माइनस N1 बाई N1 करेंगे तो 1, तो N माइनस 1 अपॉन, इट मींस सेम एक्सप्रेशन दिस वन इज आल्सो दिस। अंतर क्या हुआ, यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। लेकिन याद रखिएगा रेयर मीडियम मींस नॉट ओनली एयर, केवल एयर रेयर मीडियम नहीं है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इससे तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर। जैसे ये ग्लास है, ये वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वाटर से, वाटर इज रेयर and glass is denser medium. So in this way you will get the what is formula for the refraction through spherical surface. याद रखिएगा, if anybody asks to you कि what is the refraction or what is the formula for the refraction through spherical surface in terms of N1 N2, तो आप इसको लिख लीजिए, और also you can use direct formula N upon V minus 1 upon U is equal to N minus 1 upon R, लेकिन याद रखिएगा this N is what, refractive index of denser with respect to rarer. And here one note, always remember this, one note, this formula is derived कब, when ray is going from rarer to denser medium, जब रे रेयर से डेंसर में जा रही है तब हमने ये फार्मूला डिराइव किया है, ये दो। बट इफ द रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, डेंसर मीडियम में, इफ द रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इफ रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तब क्या करेंगे, देन इन दिस फॉर्मूला जहां N2 है वहां पे N1 लिखेंगे, और जहां N1 है वहां पे N2, जिसका मतलब फार्मूला को क्या मिल जाएगा, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। तो if the ray is passing from denser to rarer, denser to rarer मतलब if the object is placed in denser medium, यहाँ तो rarer medium में रखा था, if the object is placed in denser medium, then in this formula at place of N2 you will write N1, or in this formula at place of this N you will write 1 by N. What you will write? 1 by N. Be careful about this one कि object is placed in rarer medium or denser. This formula is derived for when an object is placed in rarer medium और denser में रखा जाएगा, तो चाहे N2 की जगह पे N1, N1 की जगह पे N2, इनके N1 N2 के पोजीशन को रिप्लेस कर दीजिए।
या इस फार्मूले में एट प्लेस ऑफ n यू विल राइट 1 अपॉन n। तो फार्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन n b minus 1 upon u is equal to 1 upon n minus 1 upon r, and in this way you can find out the expression for the refraction through a spherical surface when object is placed either in paler medium or in denser medium. So what you will do, first you do the practice for this one, at least 2 times you do the practice, draw the diagram and same derivation 2-3 times as you want, you do the practice, and then you will start by taking the help of your book. You will do from yourself refraction through convex spherical surface, and in your exam they will ask either utilize the expression for the concave spherical surface or convex spherical surface. Even the result will come same, but the diagram will different. Rest thing I and I and R there will comes different, but finally you will get the same formula what you have derived here. So I think maybe it's enough for today. Next day means in the next video I will tell about this one. How can we find the so something I want to tell you about the lenses, and then I will give you the lens makers formula, which is very important of this. So this derivation and the next derivation which I am going to tell, all these derivation is very important. So please all